Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. Welcome again in your class. Kids, do you remember what is preposition? In previous video, we learned that prepositions describe a relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Like on, between, beside, under, in, above, in front of, near और behind. तो चलिए अब हम कुछ और एक्सरसाइज करते हैं बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन. सो लुक एट द पिक्चर इन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 40 एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इस पिक्चर में आप ढेर सारे थिंग्स को देख रहे होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है? यस, इसमें आप सी, पीपल, आइसक्रीम कार्ट, टॉर्टॉइस, स्टारफिश, डॉग और चिल्ड्रन देख रहे हैं. So let's see the first sentence. Some people are swimming dash the sea. तो बताइए जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं वो सी के अंदर है या फिर सी के ऊपर है? वे लोग सी के अंदर है. So we fill preposition in and the sentence is some people are swimming in the sea. Next sentence is an ice cream seller is standing dash a big umbrella. पिक्चर को देखिए और बताइए कि आइसक्रीम सेलर कहाँ पर खड़ी है? क्या अम्ब्रेला के ऊपर है या फिर अम्ब्रेला के नीचे है? आइसक्रीम सेलर अम्ब्रेला के नीचे है, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे अंडर एंड द सेंटेंस इज an ice cream seller is standing under a big umbrella. And the next sentence is some children are dash the ice cream cart. तो बताइए चिल्ड्रन कार्ट के ऊपर है या फिर कार्ट के पास है? यस, चिल्ड्रन आइसक्रीम कार्ट के पास है. We will write preposition word near means pass and the sentence is some children are near the ice cream cart. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है There are two starfish and a baby tortoise dash the beach. तो starfish और baby tortoise कहाँ पर है? Yes, वो सब बीच के ऊपर है. So we fill preposition word on and the sentence is There are two starfish and a baby tortoise on the beach. And the last sentence is a dog is walking dash Mr. and Mrs. Same. पिक्चर में two people walk कर रहे हैं. They are Mr. and Mrs. Same. और dog कहाँ पर है? वो dog Mr. और Mrs. Same के पीछे है. पीछे का preposition word होता है behind. So the sentence is a dog is walking behind Mr. and Mrs. Same. So kids, I hope you have understood how to fill preposition. तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का होमवर्क क्या है. And the homework is based on preposition. And the homework is where is the ball? Choose in, on, under, near, behind और between. आपको पिक्चर देख करके बताना है कि बॉल किस पोजीशन पे है. In means होता है अंदर, on means ऊपर, under means नीचे, near means पास, behind means पीछे, between means बीच में. पिक्चर देखिए और बॉल की पोजीशन को आइडेंटिफाई करके कंप्लीट करिए. सो हमारी आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है. We will meet again in the next video for something new. That's it for today. Bye. Thank you.